ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಲಬ್ಧ ಯೌವನ ಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ದೇವಿ ಭಾಗವತ மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 3 அத்தியாயம் 10 சத்யவிரதன் கதை பாகம் 1. ஓம் நம சண்டிகாயை. ஜனமேஜயோவாச்ச கோசௌ சத்யவிரதோ நாம பிராமணாத்விஜ சத்தமः கஸ்மின் தேசே சமுத்பன்னः कीदृशश्च वदस्व मे कथं तेन श्रुतः शब्दः कथमुच्चारितः पुनः सिद्धिश्च कीदृशी जाता तस्य विप्रस्य तत्क्षणात् कथं तुष्टा भवानी स सर्वज्ञा सर्वसंस्थिता विस्तरेण वदस्वाद्य कथामेतां मनोरमां सूत उवाच इति पृष्ठस्तदा राज्ञा व्यासस्य सत्यवती स्वतः उवाच परमोदारं वचनं रचवच्छुचि. व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां श्रुता मुनिसमाजेषु मया पूर्वं गुरुत्वः एकदाहं कुरुश्रेष्ठ कुर्वं स्त्री तीर्थाटनं शुचि सम्प्राप्तो नैमिषारण्यं पावनं मुनिसेवितं प्रणम्याहं मुनीन् सर्वान् स्थितस्तत्र वराश्रमे विधिपुत्रास्तु यत्र सञ्जीवन्मुक्ता महाव्रताः कथाप्रसङ्ग एवासीत् तत्र विप्रसमागमे जमदग्निस्तु पपृच्छ मुनिनेयं सपास्थितः जमदग्निर्वाच सन्देहोऽस्ति महाभागा मम चेतसि तापसाः समाजेषु मुनीनां वै निस्सन्देह सूर्यो अश्विनो भगपूषा निशानातो ग्रहास्तथा आराधनीयतमत्कोत्र वाञ्छितार्थफलप्रदः सुखसेव्यश्च सततं चाशुतोषश्च मानदः अब्रुवन्तु मुनयः शीघ्रं सर्वज्ञा संस्थितव्रताः. एवं प्रश्ने कृते तत्र लोमशो वाक्यमब्रवीत् जमदग्ने शृणुष्वैतत् यत्पृष्टं वैद्वयाधुना सेवनीयतमा शक्तिः सर्वेषां शुभमिच्छतां परा प्रकृतिराध्या च सर्वगा सर्वदा शिवा देवानां जननी सैव ब्रह्मादीनां महात्मनाम् आदिप्रकृतिमूलं इतिहासं प्रवक्ष्यामि शृण्वन्तु मुनयः शुभम् अक्षरोच्चारणादेव यथा प्राप्तं द्विजेन वै कोसलेषु द्विजश्कश्चिद्देवदत्तेति विश्रुतः अनपत्य चकारेष्टिं पुत्राय विधिपूर्वकं तपसा तीरमास्ताय कृत्वा मण्डपमुत्तमं द्विजानाहूय वेदज्ञान् सत्रकर्मविशारदान् कृत्वा वेदीं विधानेन स्थापयित्वा विभावसून् पुत्रेष्टिं विधिवत् तत्र चकार द्विजसत्तमः ब्रह्माणं कल्पया साम सुहोत्रं मुनिसत्तमम् आध्वर्यं याज्ञवल्क्यश्च होतारं च बृहस्पतिं प्रस्तो उद्घाता सामगश्रेष्ठः सप्तस्वरसमन्वितं रदन्तरमगायत्तु स्वरीतेन समन्वितं तदा स्वरभङ्गो भूत्कृते श्वासे मुहुर्मुहुः देवदत्तचुकोपाशु कोकिलं प्रत्युवाचः मूर्खोऽसि मुनिमुख्याद्य स्वरपङ्कस्त्वया कृतः काम्यकर्मणि सञ्जाते पुत्रार्थं यजतश्च मे गोपिलस्तु तदोवाच देवदत्तं सुकोपितः मूर्खस्ते भविता पुत्र षट्शब्दविवर्जितः सर्वप्राणिशरीरे तु श्वासोच्छ्वास सुदुर्ग्रहः न मेऽत्र दूषणं किञ्चित् स्वर
कथं क्रुद्धोऽसि विप्रेन्द्र वृथा मयि निरागसि अक्रोधना हि मुनयो भवन्ति सुखदा सदा स्वल्प अपराधे विप्रेन्द्र कथं शब्दस्वयाह्यहम् अपुत्रोऽहं सुतप्तः प्राक्तापयुक्तः पुनः कृतः मूर्खपुत्रादपुत्रत्वं वरं वेदविदो विदुः तथापि ब्राह्मणो मूर्खः सर्वेषां नित्य एव हि पशुवच्छूत्रवच्चैव न योग्य सर्वकर्मसु किं करोमीह मूर्खेण पुत्रेण द्विजसत्तम यथा शूद्रस्तथा मूर्खो ब्राह्मणो नात्र संशयः न पूजार्हो न दानार्हो निन्दय नासने पितृकार्येषु देवकार्येषु सद्विजः मूर्खसमुपवेश्यश्च कार्यस्य फलमिच्छता राज्ञा सूत्रसमो ज्ञेयो न योज्य सर्वकर्मसु कर्षकस्तु द्विजकार्यो ब्राह्मणो वेदवर्जितः विना विप्रेण कर्तव्यं श्राद्धं कुशचाटेन वै न तु विप्रेण मूर्खेण श्राद्धं कार्यं कदाचन आहाराद् दधिकं चान्नं न दातव्यमपपण्डिते धाता नरकमाप्नोति गृहीता तु विशेषतः दिग्राज्यं तस्य राज्ञो वै यस्य देशे बुधा जनाः मूर्खा यत्र सुगर्विष्ठा दानमानपरिग्रहैः तस्मिन् देशे न वस्तव्यं पण्डितेन कथञ्चन असतामुपकाराय दुर्जनानां विभूतयः पिछुमन्तः पलाढ्योऽपि काकैरेवोपभुज्यते भुक्त्वान्नं वेदविद् विप्रो वेदाभ्यासं करोति वै क्रीडन्ति पूर्वजा तस्य स्वर्गे प्रमुदिता किल गोपिलातः किमु तं वै त्वया वेदविदुत्तम संसारे मूर्खपुत्रत्वं मरणादधिगर्हितं कृपां कुरु महाभाग शापस्यानुग्रहं प्रति दीनोद्धारण शक्तोऽसि पठामि तव पादयोः लोमशोवाच इत्युक्त्वा देवदत्तस्तु पतितस्तस्य पादयोः स्तुवन्तीन गृहृदत्यर्थं कृपणसाश्रुलोचनः गोभिलस्तु तदा तत्र दृष्ट्वा तं दीनचेतसं क्षणकोपमहान्तो वै पापिष्ठा कल्पकोपनाः जलं स्वभावतः क्षितं पावकादपयोगतः उष्णं भवति तच्छीघ्रं तद्विना शिशिरं भवेत् दयावान् गोपीलस्वाह देवदत्तं सुदुःखितं मूर्खो भूत्वा सुतस्ते वै विद्वान्नपि भविष्यति इति दत्तवरसोत मुदितो भूद्विजर्षभः इष्टिं समाप्य विप्रान् वै विससर्जयता विधि कालेन कियता तस्य भार्या रूपवती स सीमन्तोन्नयनं चैव कृतं वेदविधानतः ददौ दानानि मुदितो मद्वेष्टिं सफलं तथा सुशुभे पुत्रं रोहिणीयुते दिने लग्ने शुभेत्यर्थं जातकर्म चकार सः पुत्रदर्शनकं कृत्वा नामकर्म चकार च उत्तत्य इति पुत्रस्य कृतं नाम पुराविदान् च षाष्ठे वर्तता वर्षे शुभे शुभस्वासरे तस्योपनयनं कर्म चकार विधिवत् पिता वेदमध्यापयामास गुरुस्तं वै वृते स्थितं नो चकार तदोत्तत्यः
एवं कुर्वन् सदाभ्यासं जातो 12 वार्षिकः न वेदविधिवत् कर्तुं सन्ध्यावन्दनकं विधिं मूर्खो भूदिति लोकेषु गता वार्तातिविस्तरा ब्राह्मणेषु च सर्वेषु तापसेष्वितरेषु च जहासलोकस्तं विप्रं यत्र तत्र गतं वने पिता माता निनिन्दात मूर्खं तमतिपत्सयन् निन्दितोत जनैः कामं पितृभ्यामत बान्धवैः वैराग्यमगमत् विप्रो जगामवनमप्यसौ अन्धो वरस्तथा पङ्गुर्न मूर्खस्तु वरस्सुतः इत्युक्तोऽसौ पितृभ्यां वै विवेश काननं प्रति गङ्गातीरे शुभे स्थाने नियमं च परं कृत्वा नासत्यं प्रब्रवीम्यहं स्थितस्तत्राश्रमे रम्ये ब्रह्मचर्यवृतो हि सः इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सत्यव्रताख्यानवर्णनं नाम 10मोऽध्यायः। ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।